हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इनफिनिटी मैथ्स बाय जसप्रीत। लास्ट वीडियो ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ AP ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। A ਤੇ D ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ nth ਟਰਮ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ दैट ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ an is equal to a plus n minus 1 into d। ऑलरेडी अपन को पता ही है कि a is the first term, a is first term of AP and d is the common difference where n is the number of terms। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ AP ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ। ਓਕੇ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ AP ਹੈ 2 5 8 11। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਰਮ ਇਜ਼ A that is 2 and difference that is 5 minus 2 is 3। ਨਾਓ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ 8th ਟਰਮ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਨ जो गिवन टर्म है ये डी ऐड कर देंगे सी है ना। 11 + 3 इज 14। सिमिलरली 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ऐड कर दे then 17 इज द नेक्स्ट टर्म। बट एवें ही अपन नेक्स्ट टर्म्स बाय यूजिंग nth फार्मूला फाइंड करनियां ने। वी हैव टू फाइंड द 8th टर्म ऑफ द AP। ठीक है, सो ये फार्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ पुट करो an ਤਾਂ ਆਪਾਂ फाइंड करना। वैल्यू ऑफ a इज 2 प्लस वैल्यू ऑफ n इज 8 माइनस 1 into d that is 3। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व करो। 2 plus 8 minus 1 is 7. 7 into 3 is 21. So 21 plus 2 is 23. So our 8th term, where value of n is 8, 8th term of AP is 23. Simply है ना, इस तरीके नाल आपां बाकी सारे सम solve करना। Now this is our first question. Which term of this AP is minus 81? ठीक है, so first part आपां पहले solve करदे हां। Find करना कि what is the value of n for this term। गिवन की है वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए एन इज -81। वैल्यू ऑफ ए इज 21 दैट इज फर्स्ट टर्म है ना। डी डी इज अ कॉमन डिफरेंस। इन्हों किवें फाइंड करांगे, किसी भी दो टर्म्स नु माइनस कर दो। ठीक है, लाइक 18 माइनस 21 देन इट कम्स आउट टू बी -3। सो बस हुण nth फार्मूले दे विच पुट करो। nth फार्मूला है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यू ऑफ a1 इज 81 is equal to 21 plus n ਦੀ वैल्यू फाइंड करनी है and d is -3। सो हुण इनू सॉल्व करो। -21 is equal to 21 minus 1 into -3। इनू सॉल्व करके आजो -102 is equal to n minus 1 into -3। इत्थे हुण -3 इहदे नाल मल्टीप्लाई है, इधर हो जू डिवाइड दा। सो नेक्स्ट हो जू -102 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू n minus 1। बस जस्ट कितना की है, इतने -3 इतने मल्टीप्लाई है, इतने हो जू डिवाइड। सो इनू कट करके 34 आ जाओ दैट इज इक्वल टू n minus 1। अब n की वैल्यू फाइंड करनी सी, इतने 1 माइनस है, इतने हो जाओ प्लस। 34 plus 1 is equal to n। सो वैल्यू ऑफ n is 35। मीन्स -81 is AP दी 35th टर्म। नैक्सट पार्ट है ऑल्सो इज एनी टर्म 0 कि इस AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 0 ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ an ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ that is 21। ਵੈਲਿਊ ਆਫ d is -3। ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ nth ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ then 0 is equal to value of a is 21 plus n minus 1 into d। 21 प्लस है इधर जो माइनस इज इक्वल टू n minus 1 into -3। नाउ -3 इस तरह मल्टीप्लाई इतने हो जो डिवाइड दा। इन सॉल्व करके जो 7 इज इक्वल टू n minus 1। सो वैल्यू ऑफ n इज 7 plus 1 that is 8। मीन्स yes 0 is 8th term of the AP। Now in second question, we have to check whether -150 is the term of this AP। इनू सिमिलरली एवं सॉल्व करांगे जिद्दां हुण कीता। वैल्यू ऑफ A is 11 okay and value of D is 8 minus 11 that is -3 ते an दी वैल्यू है अपने कोल -150। सो nth टर्म फॉर्मूले दे विच इस वैल्यूज नूं पुट करके देखो कि n दी वैल्यू की आंदी है।
an is minus 150 is equal to a plus n minus 1 into d, that is minus 3. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। minus 50 minus 11 is equal to n minus 1 into minus 3. It comes out to be minus 61 is equal to n minus 1 into minus 3. ਹੁਣ minus 3 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। minus 61 divided by minus 3 is equal to n minus 1. ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 3161 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ n is not a whole number, so minus 150 is not a term of AP, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ, ਇਟਸ ਇਨ ਅ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ minus 150 is not a term of the given AP. Now in next question, if third and ninth term of AP are 4 and minus 8, सब तो पहले जो गिवन है आप वही राइट कर लेने कि जो AP दी थर्ड टर्म है that is 4, okay, and ninth term of AP is minus 8, then which term of AP is 0? Means we have to find the value of n जिथे term अपनी 0 होगी। सो सब तो पहला nth फार्मूला ਇਹਦੇ ਲਈ यूज करो ते ਇਹਦੇ ਲਈ यूज करो, then अपने को दो इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगे। nth फार्मूला is a plus n minus 1 into d, ठीक है। ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 3, ਸੋ a3 is equal to value of a अपन पता ही नहीं, so a plus value of n is 3 minus 1 into d। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, a3 is equal to a plus 2d, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 9, ਸੋ a9 is equal to a plus n minus 1, that is 9 minus 1 into d, which comes out to be a plus 8d. ਤੇ a9 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ minus 8. This is our second equation, ठीक है। The first equation is a plus 2d is a plus 2d is equal to a3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 4. This is our first question. ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਬਾय एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड टर्म है a plus 8d is equal to minus 8, and this is a plus 2d is equal to 4, ठीक है। इतने प्लस है, सो इतने साइन हो जाए माइनस, प्लस माइनस, इतने प्लस है तो माइनस। मीन जी भी नीचे इक्वेशन दी होंगी है वो जो साइन है वो चेंज हो जाते, ठीक है। a माइनस a इज कैंसल आउट, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 2d is 6d is equal to minus minus plus, so 8 and 4 is minus 12. So value of d comes out to be minus 12 by 6, that is minus 2. So value of d is minus 2. So ਹੁਣ ਇਸ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। I will put this value in first equation, that becomes a plus 2 into value of d is minus 2 is equal to 4. So a minus 2 into 2, 4 is equal to 4. Value of a comes out to be 8. Next आप find की करना सी, which term of AP is 0? Means an the term means value of an is 0. So a the value आप find की है, that is 8, and value of d is minus 2. So we have to find the value of n. So दोबारा nth formula use करो, that is an is equal to a plus n minus 1 into d. Value of an is 0. 8 plus n minus 1 into minus 2. So इन्हें सॉल्व करो, minus 8 is equal to n minus 1 into minus 2. ਹੁਣ ਇੱਥੇ divide ਹੋ ਜਾਓ, minus 8 by minus 2 is equal to n minus 1. So it comes out to be 4. n minus 1 is equal to 4. So value of n is 5. Means fifth term of the AP is 0. So nth term formula ਨੂੰ use ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ। Means ਇਸ formula ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ terms ਨੇ, that is an, a, n और d. ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ a ਜਾਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਇਨ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, which term of AP will be 132 more than its 54th term? ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ AP ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜੋ 132 more ਆ ਦੈਨ 54th term। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ what is the value of a? That is first term is 3. Difference, that is 15 minus 3. 15 minus 3 is 12. Okay. So ਹੁਣ equation ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? We have to find a term
which is 132 more than 54th term means A54 ये अपनी इक्वेशन फॉर्म हो ठीक है एक बार दोबारा देखो की कितना we have to find the term which is 132 more means plus करांगे 132 plus in 54th term A54 plus 132 ये अपनी an term हो जाएगी ठीक है ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ फाइंड कर रहे हैं an is equal to A54 इथे nth फार्मूला यूज करो दैट इज A plus n minus 1 है ना n दी वैल्यू है 54 minus 1 into D plus 132 so value of A is 3 plus 54 minus 1 is 53 into D that is 12 plus 132 so इन्हें solve करो 3 plus 53 into 12 is 636 plus 132 सो इनू ऐड करके आ जाओ 771 सो an is 771 आप फाइंड करना इसकी विच टर्म ऑफ AP मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n ठीक है n दी वैल्यू आप फाइंड करनी है सो nth फार्मूला दोबारा लगाओ दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी an अपने को 771 इज इक्वल टू a इज 3 प्लस n फाइंड करना एंड वैल्यू ऑफ d इज 12 सो इतने माइनस करके आ जाओ 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12 इतने मल्टीप्लाई है इतने हो जाओ डिवाइड द सो इट कम्स आउट टू बी 64 इज इक्वल टू n माइनस 1 मीन्स वैल्यू ऑफ n इज 65 ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ अ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 ये जस्ट मैं तुम्हें हिंट देवांगी ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮਲਟੀਪਲਸ ਮੀਨਸ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਰਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਰਮਸ ਨੇ 4 ਦੀਆਂ ਮੀਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ n ਕਿੰਨੇ ਟਰਮਸ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਅ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਅ 4 that lies between 10 and 250 ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ 250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰਮਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ that are the multiple of a 4 ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ a ਫਸਟ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਫਸਟ ਟਰਮ between 10 and 250 ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਤੇ that is 12 ओके नेक्स्ट होगी 16 है ना 16 माइनस 12 इज 4 मीन्स डिफरेंस कितना होगा 4 का ही डिफरेंस होगा तो आप लास्ट टर्म फाइंड करांगे लास्ट टर्म इज मीन्स 250 के नीयरली देखो कि केड़ी वैल्यू है जी 4 से डिवाइड होंगी है दैट इज 248 ठीक है सो हुण की करना जस्ट nth फार्मूला यूज करना है दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी an की वैल्यू है 248 वैल्यू ऑफ a इज 12 and n we have to find the value of n na and value of d is 4 so just इस formula ਦੇ ਵਿੱਚ put ਕਰੋ ਇਹ values ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ n ਦੀ value ਕੀ ਆਊਗੀ okay so you have to tell me what is the value of n so ਅੱਜ ਅਸੀਂ nth term formula complete ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ next video 'ਚ ਅਸੀਂ questions practice ਕਰਾਂਗੇ so video ਨੂੰ like ਕਰੋ share ਕਰੋ ਤੇ channel ਨੂੰ subscribe ਕਰੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ next part ਵਿੱਚ